Hello viewers, a very important topics of coordination compound isomerism in coordination compound. Principles of isomerism are same to that in organic you have read in organic chemistry. Molecules having same molecular formula and different characteristics are called isomers and this phenomenon is called isomerism. Isomerism may be of two types, structural isomerism and stereoisomerism. Types of structural isomerism, ionization, linkage, coordination, solvent and coordinate position. And stereoisomerism is geometrical and optical. Structural isomerism, complex of same molecular formula and different structural formula are called structural isomers and this phenomenon is called structural isomerism. First, ionization isomerism. When coordination compound of same molecular formula furnish different ions in aqueous solution on ionization is called ionization isomerism. This is the common formula of coordination compound. This complex will furnish I minus with complex ion with Br minus, complex ion with Cl minus. Hence ionization isomerism arises due to exchange of anions between coordination sphere and ionic sphere. Linkage isomerism. When difference in structural formula of isomeric coordination compound arises due to different mode of linkage of an ambidentate ligand. Ambidentate ligand. आप जानते हैं ambidentate ligand का टू मोड ऑफ लिंकेज होता है NO2 donor atom is nitrogen, ONO donor is oxygen. Solvate isomerism. In a coordination compound, H2O molecule can behave like ligand or remain as water of crystallization. So when difference in structural formula arises due to different mode of attachment of H2O molecules, it is called solvate or hydrate isomerism. Common formula CrCl3 6H2O. All 6H2O molecules are behaving like ligand. 5 H2O molecules behaving like ligand and 1 as water of crystallization. 4 H2O molecules behaving like ligand and 2 as water of crystallization. Now coordination isomerism. Very first, it arises when coordination compound consists complex cation associated with complex anion. And the difference in structural formula arises due to exchange of ligands between two coordination spheres, two complex ions. NH3 or 6NH3 as ligand with chromic Cr3 plus ion and 6Cl minus as ligand with CO3 plus ion. In this, ligands now associated to CO3 plus ion, Cl minus with Cr3 plus ion. Coordinate position isomerism. Similar to coordination isomerism, this type of bridging complex और polynuclear complex के बीच ligand का exchange हो रहा है 4NH3 and 2NH3 2Cl. 1NH3 is exchanged with ammonia molecule in this complex. Stereoisomerism. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल प्रिंसिपल आप जानते हैं, इसको हम लोग जनरल फार्मूला के लिए ले रहे हैं. M मेटल एटम है, A B C D E F ये मोनोडेंटेड लिगेंड है. A सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइक En and C2O4. A B unsymmetrical bidentate ligand like glycine. So there is no possibility of a stereoisomerism complex of type MA6 and MA5B. Complex A4B2, MA4BC, MA3B3 has two geometrical isomers and none of them are optically active. This type of complex exhibit only geometrical isomerism. A4B2, MA4BC, this is cis and this is trans. Only B will be replaced by C. MA3B3. This is called facial. इस फेस से देख रहे हैं तो A दिखेगा, इस फेस से देखेंगे तो only B दिखेगा. And this is called beryllium. MA2B2 have 5 geometrical isomers and one of them is optically active. मतलब this type of complex exhibit both geometrical and optical isomerism. इसको हम all 3 pairs of ligands are at cis position. Now all 3 pairs of ligands are at trans position. और इसमें अब A ट्रांस है, B और C cis है, B ट्रांस है, A और C cis है, C ट्रांस A और C cis. And A2
B2CD, 6 geometrical isomers, 2 of them optically active and total 8 stereoisomers। इसको उतना ड्रॉ नहीं किए क्योंकि उतना जो आपके सिलेबस में है उसको ड्रॉ कर। A3BCD के लिए 4 geometrical isomers, 1 of them optically active। A2BCD 9 geometrical isomers, 6 of them optically active, total 5 stereoisomers, 15 stereoisomers। 6 जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो 6 एनसियोमेरिक पेयर मतलब 12 हो गए, या 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल 5। MABCD 5 geometrical isomers and all are optically active, मतलब 15 geometrical isomers and all are optically active, मतलब 15 enantiomeric pairs, तो 30 stereoisomers। MA2B2C2, A B2C2 ये bidentate symmetrical ligand है। इसके 3 geometrical isomers and 1 of them optically active। A तो ये bidentate हुआ, B trans C cis, C trans B cis, both are cis, this is optically active। A optically active molecule has lack of plane of symmetry and center of symmetry। A whole to B2 या A whole to BC, 2 geometrical isomers and 1 of them is optically active, total 3 stereoisomers। यहाँ B और C दोनों लिख रहे हैं, मतलब इधर MA होल टू B2 के लिए B रखेंगे, अब A होल टू BC के लिए C रखेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। MA होल 3 exists at 2 enantiomers, there is no possibility of geometrical isomerism। AB whole 3 2 geometrical isomers and both are optically active। Tetrahedral complex, in tetrahedral complex all 4 ligands are equidistant, so there is no possibility of geometrical isomerism। But tetrahedral complex of MABCD, all different ligands, MAB whole 2 has no plane of symmetry and center of symmetry and exhibit optical isomerism। Stereoisomerism of square planar complex, a square planar complex has always plane of symmetry, so it does not exhibit optical isomerism। The square planar complex of MA2B2, MA2BC, ABCD and AB whole 2 can exhibit geometrical isomerism। A2B2 या A2BC, वही B की जगह C रख रहे हैं, 2 हुआ। ABCD, A trans to B, A trans to C and A trans to 3 बनाए and AB whole 2। कुछ क्वेश्चन है, which of the following do not show geometrical isomerism। आंसर A होल 3 बताए थे, only exhibit optical isomerism। Which of the following will have 6 isomers? Answer is 4। MA होल टू B2 है, तो पहले तो इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, एक आपके सामने दिखा हुआ है और दूसरा COEN होल टू BRCL और BR बाहर में आ जाएगा, तो 2 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, हर एक का 3, तो टोटल 6 आइसोमर्स होगा। Which of the following does not show optical activity? ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है MA4B2, नहीं शो करेगा। M ग्लाइसिनेट shows 2 stereoisomers, these are, आंसर 2 दे रहे हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, MAB होल 2 हुआ। Which of the following compounds is not expected to exhibit isomerism? ये जो NiNH3 होल टू Cl2, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए ये नहीं शो करेगा। Which of the following does not show optical isomerism? ऑप्टिकल A3B3 नहीं शो करेगा, ये 1। M8A4B2 कॉम्प्लेक्स 2, इसके 2 आइसोमर्स हैं M8, तो ये जब एक B A4B2 तो एक A रिप्लेस हो जा रहा है C के द्वारा, तो 2 आइसोमर्स बनते हैं, तो ये सिस होगा या ट्रांस होगा, देखिए
इसमें बी के रिलेटिव ऑल 4 ए लिगेंड्स आर इक्विवेलेंट पोजीशन, इसलिए ट्रांस वाला जो है और सिस वाला, यहां आप सी डालते हैं इससे ये बी, यहां सी डाल दिया और ये सी डाल दिया, तो ये फेसियल, ये मेरिडोनल बना, तो सिस आइसोमर देगा, तो आंसर 1 होगा, आंसर इज 1 होगा। सिस वाला 2 आइसोमर देगा और ट्रांस वाला 1 ही देगा, दैट्स ऑल। हाँ सॉरी, CONH3 होल्ड टू एग्जिबिट, इसमें आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होना ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, अगेन HCN होल्ड टू, ये मिड एंटेड लिगेंड है, A4B2 है, तो पहले इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे और ईच का A4B2 का 2 बनता है, तो टोटल इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे। थैंक यू।